Let us see the students of 12th standard, the remaining part of the AC voltage applied to capacitor. AC voltage is given by the equation V equal to Vm sin omega t. For such a capacitive AC circuit, the AC current is given by the equation I equal to Im sin omega t plus pi by 2. Now if you compare these two equations, this says that at any time t, phase of voltage is omega t, but phase of current is omega t plus pi by 2. So comparing this equation, we can say that the current phasor, क्योंकि current का phase कितना है omega t plus pi by 2. That means the current phasor is pi by 2 ahead than that of the voltage phasor, as they rotate in anti-clockwise direction about the origin. It means that the current reaches to its maximum value earlier than that of the voltage by 1/4 of a periodic time, and that you can understand from this graph. So this is the graph of AC voltage, because it go on changing according to sin omega t function. At time t equal to 0, voltage is 0. At time t is equal to pi by 2 omega, angle is pi by 2, voltage becoming maximum. At omega t equal to pi, voltage 0. So this is the first half cycle. In the second half cycle, the voltage goes on changing like this one. But for current, as it is omega t plus pi by 2, what does it means? It means the voltage maximum तो current 0, जब voltage 0 तो current maximum, जब voltage maximum तो current is 0, जब voltage is 0 तो current is maximum. So this dotted line graph is the graph of current I versus omega t. This continuous line graph is the graph of voltage V versus omega t according to this sine function. तो here किसी भी टाइम t पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वोल्टेज मैक्सिमम होता है कौन से टाइम पे? टाइम t इज पाई बाय 2 ओमेगा, तब करंट कितना है 0. एंड यहाँ पे फिर वोल्टेज मैक्सिमम होता है जब, सॉरी, करंट मैक्सिमम होता है जब वोल्टेज इज 0. तो यू कैन सी दैट द करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी या यहाँ पे भी कब? अर्लियर देन दैट ऑफ वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ पीरियोडिक टाइम. आप यहाँ पे देखेंगे टाइम t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0 है, लेकिन करंट कैसा है? मैक्सिमम. इट मीन्स व्हाट? करंट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू देन दैट ऑफ वोल्टेज अर्लियर बाय 1/4 ऑफ ए पीरियोडिक टाइम. Then at any time t1, value of phase is omega t1. Corresponding to this omega t1, you can have the voltage phasor and current phasor. तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज के ग्राफ को यहाँ पे कट करता है तो ये बताएगा वोल्टेज, लेकिन तब एंगल कितना वोल्टेज के लिए? सिर्फ ओमेगा t1, जबकि करंट के लिए कितना? ओमेगा t1 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. मतलब ये एंगल ओमेगा t1 से 90 डिग्री घुमा के ये करंट का फेजर आएगा. तो करंट फेजर इज लाइक दिस वन, having the angle omega t1 plus pi by 2, and voltage phasor at time t1 has the phase is omega t1. So this is voltage phasor having the phase omega t1. This is current phasor having the phase omega t1 plus pi by 2. So this is given by the equation I equal to Im sin omega t1 plus pi by 2, and this voltage is given by the equation V equal to Vm sin omega t1. So this is the phasor diagram for AC circuit with capacitor, and this is the graph of voltage and current I versus omega t for AC circuit with capacitor. Be remember. Now thereafter again important topic, discuss about the average power supplied to the AC circuit which is connected with capacitor. So here in case of such a capacitor circuit, the instantaneous power supply by the source of AC voltage to the capacitor is PC equal to current multiplied by voltage. Current I is given by Im sin omega t plus pi by 2. Voltage is given by Vm sin omega t. So Im Vm into, now sin omega t plus pi by 2 can be replaced by cos omega t,
and sin omega t remains as it is. Multiply by 2, divide by 2. So Im Vm by 2 into 2 sin omega t cos omega t. But we know this is equal to what? Sin 2 omega t. That means the PC is equal to Im Vm by 2 into sin 2 omega t. So average power supplied to capacitor over a one complete cycle is how much? So now here we determine the average power. The average method we have to take the average sign, and that so average power supplied to the capacitor over a one cycle complete cycle is PC equal to the right side का average portion. The average of Im Vm by 2 sin 2 omega t. But Im Vm being constant, 2 is constant, it come outside. So Im Vm by 2 into average of 2, average of sin 2 omega t. But average of sin 2 omega t over a one complete cycle is always 0. Therefore, this power PC equal to 0. So what is the power consumption in AC circuit connected with capacitor over a one complete cycle? It is always be 0. So thus in case of an inductor, we have seen that the current is lagging behind the voltage by pi by 2. But in case of capacitor, the current is leading ahead the voltage by pi by 2. We remember this sentence, it is useful for giving the answer of one kind of MCQ. Now let us see the next theory topic. It gives explanation about the average power consumption in AC circuit with capacitor becoming 0. How it becoming 0? So the question can be asked like this: average power consumed in capacitor AC circuit is 0. Explain how. So here we will consider again the diagrams of voltage versus omega t, current versus omega t, as we have seen earlier. The same kind of the graph is there. So this continuous line is showing the graph of voltage versus omega t. Why? Because V equal to Vm sin omega t. And this dotted line indicating the graph of current versus omega t. According to the equation I equal to Im sin omega t plus pi by 2. This graph is divided in 4 intervals. This is 0 to 1, first for 1/4 cycle, 1 to 2 for second 1/4 cycle, 2 to 3 for third 1/4 cycle, and 3 to 4 for the fourth 1/4 cycle. So this is during 1/4 cycle, this angle omega t changes from 0 to pi by 2. For second 1/4 cycle, the angle changes from from pi by 2 to pi. And for the third 1/4 cycle, angle omega t changes from pi to 3 pi by 2. And for the fourth 1/4 cycle, the angle changes from 3 pi by 2 to 2 pi. So here in this way the one cycle is completed from 0 to 2 pi. But this cycle is divided in 4 quarter cycle. So this is first quarter cycle, this is second quarter cycle, this is third quarter cycle, this is fourth quarter cycle. And we have to see each quarter cycle one by one and how this power is then finally becoming 0. So this is the first diagram. V equal to Vm sin omega t for the first quarter cycle के लिए. So here for the first quarter cycle you can see that here the voltage is 0 but current is maximum. So at 0 when the current is maximum, that means from the source of AC voltage maximum current is coming out in this direction, and accordingly the charges go on depositing on the plate A. So on the B plate negative charges are going to be depositing. You can see that during 0 to 1 as shown in figure. The current I flows from maximum value. So यहाँ से it will start to flow from maximum value and at one point it becoming 0. तो current maximum value से start होके 0 होता है. Meanwhile from maximum value to 0 and it reaches to the 0 value कहाँ पे? At one point पे. So plate A during this quarter cycle becoming positively charged and plate B becoming negatively charged. And as the plate becoming positive and negative charge, it means what? During this quarter cycle the capacitor is fully charged. And when capacitor is fully charged, then in the region between these two plates there will be an existence of electric field. Also at this time
this current is in upper half, that means it is positive. Voltage is also being upper half, that means it is also positive. So during this time you can say that voltage VC equal to Q upon C, and it reaches to the maximum value 1. तो वोल्टेज बढ़ता है एट वन पॉइंट पे, करंट कम होता है, लेकिन फिर भी इसी क्वार्टर साइकिल में बोथ करंट एंड वोल्टेज पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई you can say that the capacitor is charged and during this 1/4 cycle power is positive. क्यों पावर पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव पावर का मीनिंग ये, during this time interval whichever the amount of energy is drawn out by this capacitor from the AC source is going to be stored inside the capacitor in the form of electric field. So power is positive means the energy is absorbed by this capacitor from the source, and this energy gets stored in the region between these two plates in the form of electric field. Then we come for the second quarter cycle 1 to 2. For second quarter cycle देखो यहाँ पे करंट क्या होता है, करंट इसकी डायरेक्शन रिवर्स करता है, यानी कि अब ये जो करंट ऐसा था तो इसकी जगह उल्टा करंट हो जाएगा. एंड ये करंट कैसे होता है, जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ता है, मैक्सिमम तक करंट बढ़ता है. इट मींस व्हाट, ये करंट अब देखेंगे कि दिस कैपेसिटर जो पूरा चार्ज था इट गो ऑन डिस्चार्ज, इट गो ऑन डिस्चार्ज बिकॉज द वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे एज वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू वैल्यू एंड वीसी इक्वल टू क्यू अपॉन सी का मीनिंग वोल्टेज कम होता है, मतलब ये दोनों प्लेट के ऊपर का चार्ज धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस यहाँ जाते हैं. तो दिस इज सेकंड साइकिल. So now during this second quarter cycle, so during this second quarter 1/4 cycle, the current I reverses its direction, and as the current I reverses its direction, you can see that this current I from plate से लेके source में जाएगा. So accumulated charges on the plate are depleted. Depleted मतलब वो accumulated charges धीरे धीरे खाली हो जाते हैं. So the capacitor is under discharging process, and at one position पे, यहाँ पे one position पे आते ही आप देखेंगे वोल्टेज जीरो हो गया. तो वोल्टेज जीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू वीसी इक्वल टू क्यू अपॉन सी दोनों प्लेट के ऊपर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जीरो हो जाएगा. सो कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग एंड एट वन व्हेन द वोल्टेज बिकमिंग जीरो द कैपेसिटर इज सेड टू बी फुल्ली डिस्चार्ज. तो फुल्ली डिस्चार्ज हुआ मतलब अब एट दिस टाइम हियर यू कैन सी दैट करंट की वैल्यू लोअर हाफ में है, तो करंट इज नेगेटिव, वोल्टेज इज पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव बिकमिंग नेगेटिव. इट मींस द पावर इज नेगेटिव. And voltage is also, voltage is positive but current is negative, so that product power is also negative. And power negative का मतलब यहाँ पे during earlier 1/4 cycle में जो amount of energy इसमें store हुई थी वो energy फिर से source of AC voltage को return हो जाती है. It means the energy which was absorbed during the earlier 1/4 cycle is returned back to the source of AC voltage. The same kind of process can be repeated for the another third 1/4 cycle and the fourth 1/4 cycle. तो यहाँ पे मैंने थर्ड 1/4 cycle के लिए 2 to 3 के लिए बताया है. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस वन, तो अब आप देखेंगे तो करंट तो ए से बी की ओर ही जा रहा है. करंट कहाँ पे जा रहा है, ए से बी जा रहा है, लेकिन कैसे, वाया सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज से. इसीलिए अब ये करंट ए से बी की ओर वाया सोर्स से जा रहा है. It means the B plate positively charged होगी and A plate negatively charged होगी. That means polarity gets interchanged. So during 2 to 3 process, बराबर voltage भी negative, current भी negative है. तो during 2 to 3 process, as the current continues to flow from A to B, तो ये current पूरा source से होके यहाँ पे आ रहा है. And that's why the plate B go on becoming positively charged and go on, and at the same time the plate A go on becoming negatively charged. So again the capacitor is under charging process, and when it is fully charged, then at that time whichever the amount of energy यहाँ से जो source से खींचा गया by capacitor से is going to be stored inside the capacitor in the form of electric field. क्योंकि during this stage the power will be positive. क्यों positive? क्योंकि current आप देखेंगे नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, एंड दोनों नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव. एंड at this time the polarity have been reversed. So as the current continues to flow from A to B, the capacitor is charged to reverse the polarity
here B is positive, plate A is negative, when both current and voltage are negative, so the power is positive. Power positive का मीनिंग, अब यहाँ पे कैपेसिटर ने जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स में से खींच ली, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द रीजन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो गई। अब यहाँ पे इन द फोर्थ केस में क्या आएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज का मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब देख लेना, तो ये फर्स्ट केस में करंट, ये सेकंड केस में करंट, ये थर्ड केस में करंट, और थर्ड के बाद फोर्थ में फिर से करंट ऊपर की ओर, मतलब क्या, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। रिवर्स हो गई मतलब अब ये करंट पूरा ए से बी की ओर नहीं, लेकिन बी से ए की ओर जाएगा। तो ये द करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन एट 3 एंड इट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। इट मींस व्हाट, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस सोर्स की ओर जाएंगे, एंड एज इट गोज टुवर्ड्स द सोर्स, it means what, the capacitor is going discharge, and exactly at fourth position पे there will be no charge on two plates, that means capacitor is fully discharge condition, and at that time again you will see the power will be negative। कैसे, तो देखो ये वोल्टेज पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पावर इज नेगेटिव, एंड पावर नेगेटिव मीन्स व्हाट, एट दिस टाइम this capacitor is returning back that amount of energy which was stored to the source of AC voltage, and in this way the average power consumption, यानी for the first के लिए पावर पॉजिटिव, सेकंड के लिए पावर नेगेटिव, फिर से पावर पॉजिटिव, फिर से पावर नेगेटिव, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हुई, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटर्न हो गई, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से स्टोर्ड हुई, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से रिटर्न हो गई। तो ये दो पॉजिटिव पावर, ये दो नेगेटिव पावर, एंड दोनों का सम मिलेगा आपको, टोटल पावर इज जीरो, दैट इज एवरेज पावर इज जीरो। तो इवन दो द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वन साइकिल इज जीरो, there is a flow of current is there, and whenever there is a flow of current, then this kind of the current is said to be what, wattless current is there।